one of our most sensational and amazing hip hop artists in the country right now, Yungsta. Welcome to On BJ's playlist. I'm so happy to be doing a hip hop interview, a hip hop based interview after I'm not sure how many weeks. I don't even remember the last artist that I have interviewed, at least from the hip hop community, and that's my bad because I mean, there's just so many of you, and all of you are going places. Clearly now, आप लोग के पास time नहीं है for humble, mere mortals like us right now. Y'all are just नहीं traveling नहीं ऐसा places. कोई सीन नहीं है मैं आपके लिए टाइम निकाल के आया हूँ और क्या क्या I am सीन so है तो ऐसा happy. कुछ Thank you so much, बट and या thank you for glad the to be here. Thanks for having me. Thank you. Thank you so much. We are here, of course, to discuss your sensational new album, MEEN, which you have removed now in collaboration with Sez On The Beat, boy. And I hope I got that right. Sez shouldn't, he 100% should, yes. he shouldn't thrash me for it. But wow, I mean, such an amazing album, Youngster. And I think this is the culmination of, your journey from being a young lad from the national capital. It talks about, it's by far, I'm sure, your most personal work till date. It has, Yes. songs that really, uh, it's a reflection of everything you've been through, from the time you must have first discovered the knack of wanting to make music to now actually making it and, discovering new things and learning along the way. So, in a nutshell, what does MEEN to you? What does it mean to you now? And not as an artist, but just as an individual. Mean as an individual, as like that's kind of difficult for me to separate because uh, during making this album, I kind of in the process I discovered a lot of things like that I did not know that are there, like a lot of feelings, a lot of emotions, a lot of layers to this. Because while writing and while figuring out what to write and how to approach it and all that, there were layers that I was feeling, and that kind of made me also realize things as a person, as an individual, and realize things as an artist. तो है ही मतलब as an artist तो काफी चीजें realize करी हैं about what I can do, what I cannot do, what's my strong suit and all that. But as a person also, like I discovered a lot of things. It was like kind of, it was like a meditation. It was like a therapy process for me. वो मैंने बोला भी एक गाने में, but that's what it is. Like इससे पहले शायद कुछ कुछ गानों में there have been those similar kind of feelings, but this is where it's all like, you know, for me also this album is kind of like a milestone and a check about, what I am today and what I यहाँ से फिर नेक्स्ट है. मतलब सब कुछ अब आगे है, यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है. दिस इज लाइक अ माइलस्टोन दैट it's like a badge that a friend told me this. A friend texted me this after he listened to the album. He was like, as a person, for you, this is a badge that you will wear from here on. And that's what, and I'm like just happy for me that this album is what I'll wear, like first album jo bhi hai, but this project is what I'll be able to just say and put out there, that this is my first project as an artist, but also this is my first project which as a person, as an individual, has changed me a lot. Like, you know, growth wise, मतलब उस process में ही मैंने काफी चीजें realize करके काफी मतलब ऐसा grow हुआ हूँ. And from here on as a person also, I'm different, similarly how I'm different as an artist also. Has there ever been an instance, Yangi, that you have gone back to, verses that you had written 10 years ago, और अभी वो पढ़ के लगता है कि अच्छा ये मैंने ऐसा लिखा था, या फिर कभी कभी वो एक थॉट आ जाता है भाई ये क्या लिख दिया मैंने ऐसा. आर यू एबल टू काइंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट? या आई मीन पुराना जो लिखा हुआ है वो तो ऐसा, मतलब अब तो कुछ कुछ चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि ओ लाइक आई वाज 16 and I was writing this shit, like dope. ऐसा
वो भी होता है कि बढ़िया है, मस्त है, मतलब मैं 16 साल की उम्र में ये सब लिख रहा था. एंड more than, more than micro analyzing stuff, Yeah, just the fact that I was 2015 में I dropped वो. And for me, I know that the purpose of me doing all that was not to set anything in stone. And yeah, you know, the purpose of that was just DIYing my way through making music and learning. That's why मेरा पहला मिक्सटेप का नाम फ्रेशमैन था, मेरा दूसरा मिक्सटेप का नाम रिहर्सल था. तो इट काइंड ऑफ लाइक कॉन्शियसली आई वाज डूइंग दैट, कि मेरे को पता है इट right, माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग आउट देयर, बिकॉज आई माई सेल्फ एम लर्निंग. मेरा रेफरेंस पॉइंट इंडियन हिप हॉप में कुछ भी नहीं है. मेरा रेफरेंस पॉइंट correct. ले देके बोहेमिया है. एक एक रेफरेंस पॉइंट. और वो Okay, भी मतलब ही इज ऑल्सो नॉट somebody from India doing it. वो he is also right. in like US or whatever. I might be wrong. मतलब from basically Western Yeah, वो and he's not from he's he's not making from music India out there. originally. हाँ या he's तो भाई अब वो बाहर उनका जो भी उनको उनका लाइफ स्टाइल लगती, द पीपल अराउंड हिम वर डिफरेंट. उनका एज अलग है, जो भी है, तो उनका पूरा लाइफ स्टाइल अलग है. तो वो जो कह रहे हैं मेरे को समझ में आ रहा है. ही इज मेकिंग what while I'm listening in English, she's doing in Punjabi, but वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी नहीं है ना, क्योंकि मैं मिडिल क्लास गोरखपुर का लड़का हूँ. मेरे को नहीं पता चीज है, क्या सीन है. एंड तो आप क्या जो मैं वाकई सुन, गोरखपुर से हैं कि आप हमेशा से दिल्ली में ही पले बड़े थे? नो, आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली टू डू माय कॉलेज. Okay, I shifted to Delhi to do my architecture in 2012 or 2013 basically. आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे? वाह! तो आर्किटेक्चर पढ़ते पढ़ते हिप हॉप करने का ख्याल कैसे आ गया? मतलब ये नहीं, हिप दिस इज हॉप समथिंग मतलब वेरी अनथॉट ऑफ. रैप में पहले एक ऐसा म्यूजिक रैप में पहले से कर रहा था. एंड लाइक इन सो वही आई एज आई सेड कि 2010 10th कॉलेज, ये 10th क्लास में मैं आई स्टार्टेड राइटिंग लाइक and figuring out कि okay, maybe what I'm doing is what rap is also, and figuring my way through that. In 2011 I was also pursuing my IIT का coaching like that way, and like going to a local IIT coaching center that way, and JEE का preparation कर रहा था मैं. But it's down somewhere down halfway through 11th I was like, I'm not doing IIT, I'm doing architecture because it's I want to do music, right? एंड somewhere down the line मेरे दिमाग में वो था कि भले ही, क्योंकि उस वक्त सीन नहीं था ना कुछ, मतलब हिप हॉप सीन तो था ही नहीं कुछ. इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट ऑल आई न्यू वाज एट दैट टाइम ब्रदर वी वाज ऑन VH1, Yeah. and that was the only reference point. And I also was rapping in English at that point, writing English at that point. थोड़ा बहुत हिंदी लिख रहा था, बट मोस्टली इट वाज इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश ही सुन रहा था मैं. बाहर भी, हाँ. बाहर से जो सुन रहा था मैं, एमिनेम, जेजी, लिल वेन, 50 सेंट, ड्रेक, कोल, ये सब सुन रहा हूँ मैं. और uh, देख रहा हूँ जो VH1 पे बॉम्बे बेसमेंट इज डूइंग, वो बॉब बोमूलो का बैंड है, वो कर रहा है हिप हॉप. एंड Brother V is rapping, Smokey is rapping, Encore from Mumbai is rapping, or everybody in English. So कोई ऐसा हिंदी का रेफरेंस पॉइंट इतना इतना नहीं था. There were a few Hindi हाँ. rappers also, MC Heem and Jiggy and all that. But मेरे को इतना वो रेफरेंस पॉइंट नहीं था. I do not know कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी है. तो but हाँ, like because I wanted to do music, I was like, okay, architecture is still somewhere or the other creative. Right. And my father also was like, okay, you don't, architecture is also a good go because it's something that you can practice instead of going for a job. So if you don't want to like go into that kind of situation, you can do architecture. And I was like, okay, मेरे को physics chemistry में देना नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा ध्यान, मैथ्स में पास हो जाऊंगा बस तो भी चलेगा. तो करते हैं यही. एंड देन आई वाज लाइक, ओके, फिर मैंने, आई जस्ट लाइक रोट
I was studying, trying to figure my way out, but I was doing like गाने वाने भी लिख रहा था मैं ऐसा दरवाजा आड़े लगा के लग रहा है मम्मी को पढ़ रहा हूँ बट मैं गाने नहीं लिख रहा था so but हाँ like that's why I kind of got into architecture because I was like okay I'll just be able to and that's what happened also like in my college it was still better than like attending वैसा वो because आर्किटेक्चर ड्राइंग की क्लासेस मेरी 4-4 घंटे की फोर कंटिन्यूअस पीरियड्स 12 बजे से 4 बजे तक एक ही क्लास चल रही है आर्किटेक्चर ड्राइंग की एंड आई एम लिसनिंग टू माय लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स मेकिंग like architecture like making whatever मतलब drawings and Right. architecture drawings and whatever so it was chill मतलब वही MEEN is where all you friends who have grown up and grown up together professionally and personally, watching each other from your younger days in Delhi together, and now you all are working, on this album, and there's some amazing collaborations. Firstly, if I have to just dissect all the amazing collaborators you have on board this album. Firstly, let's begin with Sez on the Beat. Sez is somebody who clearly, he is the man who has brought forth some of the biggest names in the Indian hip 100%, hop scene 100%. today. And I think to a certain extent, I feel that he's also someone who's not been given or not being spoken about, not being celebrated enough, in the same capacity that the rappers who have come ahead in the Indian hip hop space have been spoken about. I think a lot of credit is still due for Sez. So as a collaborator, how do you look at what Sez has brought to this album, and what does Sez bring to your discography? मेरा पहला गाना लाइफ का जो ओरिजिनल कंटेंट था वो मतलब रीमिक्स तो करते थे हम लोग बट द फर्स्ट ट्रैक ऑफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय अनदर प्रोड्यूसर वाज सेज इन 2011 एंड उसके बाद वी मेड अ कपल 3-4 मोर ट्रैक्स एंड देन वही मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया उसका कॉलेज था जो भी था तो वी वर लाइक ओके कूल वी वर लाइक डूइंग आवर ओन थिंग्स बट आफ्टर coming into this music thing right after like why ever since I left that whole wo calm wala scene and I was like okay I'll do my masters and I'll keep making music on the side that's when I got with Sez on the movement and मेरा ये भी था कि and during that whole COVID thing I made 12 tracks just to send it to Sez and let him know that I'm serious for this shit and I want to make my first album with you as the producer because Lovely. इसके पहले मैं काफी कुछ खुद से कर रहा था मतलब महफिल भी मैंने जो मिक्सटेप एल्बम डाली थी वो Yes. मैंने खुद से एग्जेक्ट कराया प्रोडक्शन मैंने मिक्स मास्टर करवाई मतलब मिक्स मास्टर भी खुद करी है कुछ गाने मिक्स मास्टर एग्जेक्ट करे हैं बट सब कुछ खुद से करा है सब फुल ये मतलब फुल पावर का सारा जो भी कंटेंट है वो मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस कर रहा हूँ मिक्स मास्टर कर रहा हूँ जो भी चीजें करवा रहा हूँ प्रोडक्शन तो आई काइंड ऑफ हैड आफ्टर महफिल आई वाज इन दैट जोन की ओके नेक्स्ट थिंग आफ्टर महफिल आई नीड टू ड्रॉप एन एल्बम and I need to be in that zone for that where I'm solely focused on the music aspect of it like how I want to sound what I want to write all of that and the only person apart from myself like apart from myself in the sense ki the only person that I trust even more than myself on the mix and how it will sound and because whatever ki wo process कैसे आना है is said on the beat. That's it. I don't trust anybody else. At least as of now. Because कोई किसी से के भी साथ काम करूंगा मतलब the trust in the sense what I'm saying is कि वो इस लेवल का है कि अगर मैं किसी भी और के साथ काम करूंगा तो कोई मेरे को मिक्स भेजेगा मैं वो मिक्स सुन के उसके साथ बैठ के ट्वीक करवाऊंगा समझ रहे हो मतलब 3-4 बार बैक एंड फोर्थ होगा ऑल ऑफ दैट वो भी है which says it's like कि I know that after I've recorded वो जो मेरे को मिक्स करके भेजेगा वो फाइनली होगा
Right. मेरे को बस Correct. कुछ ट्वीक्स बताने होंगे इधर उधर, बट मोस्टली वो साउंड वाइज फाइनली होगा। अगर नहीं भी होगा तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इतना डीपली कि क्या करना है, वो उसको खुद ही पता है कि अभी इसमें अगर कुछ बचा है तो क्या बचा है एंड क्या करना है। Yash, before we conclude, MEEN has some amazing collaborations from your contemporaries, whether it's Yash Raj, there is Frappe Ash, of course, there's Calm from See Them On, Eye Patch. While working with all these amazing artists, what is the most outstanding anecdote, observation, or for the lack of a better word, what has been the most outstanding learning while working with all these different but yet also amazingly talented artists? What's been the common ground that you feel that you guys have touched upon with one another? कॉमन ग्राउंड टच तो काफी सारे होंगे, क्योंकि द होल पॉइंट इज दैट वी ऑल आर ऑन अ कॉमन ग्राउंड इज व्हाट मेक्स देम ऑन द एल्बम, राइट? बिकॉज ऐसा सिर्फ कोलैब कोलैब के लिए कोलैब्स नहीं है इस एल्बम में। लाइक आई लाइक कॉन्सेप्चुअली it's all like all of the collabs, they conceptually make sense and play a part in the story as an integral part. मतलब, so basically, for example, Calm and Frappe on Delhi. Now, why are only those two boys there and not, why not, maybe why not Raga? Because Raga is also Delhi, right? Why not Encore? Because उसके हुक में मैंने बोल रखा है लौंडा दिल्ली का मैं नहीं, फिर भी दिल्ली पूरी जानती है, मैं दिल्ली का लड़का नहीं हूँ। एंड सिमिलरली फ्रैपे और काम भी दिल्ली के लड़के नहीं है। फ्रैपे रुड़की का है, काम नैनीताल से आता है। मतलब he has been in Delhi, in and around Delhi, but he's मतलब basically not from like Delhi that way. तो दैट्स वाई कि वो जो लड़का है जो गोरखपुर से दिल्ली आया है और दिल्ली में अब एस्पायर कर रहा है चीजें, उसके दोस्त भी दिल्ली के हैं। एंड ये उसके दोस्त भी दिल्ली के नहीं है, बाहर के दोस्त हैं, बट हैं उसके दोस्त। और वो एंड में होना ही था मैं, जहाँ पे द टू फ्लैग बेयरर्स ऑफ द दिल्ली हिप हॉप, मतलब वैसे देखोगे आप तो Ah, ऑनकोर एबीजे एंड रागा। So it's also an analogy of how a different city embraces this character, right? So that's why Encore and Raga are on the last track. उसके जस्ट पहले एंड दिस दैट ट्रैक इज लाइक कि हो गया सब, जो भी होना था वो हो गया स्टोरी में। अब सारे दोस्त, इट्स लाइक द हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ सिचुएशन कि अब सारे दोस्त वापस आ गए, एवरीबॉडी इज बैक, और होना ही था। एंड क्रेडिट्स, मतलब अगर वो मूवी है, अगर मीन इज अ मूवी, तो होना ही था एज द आफ्टर मैथ एंड द क्रेडिट्स बेसिकली। वाई टोटका हैज इक्का ब्रो इज व्हाट आई सेड इन द इंटरल्यूड आल्सो, कि वो कैरेक्टर जो है, मैं बेसिकली एज अ थर्ड पर्सन, बचपन में मैं सपने नाम का एक गाना था इक्का भाई का, जो मैं वीडियो देखता था एंड आई वाज लाइक ओके, दिस दिस गाय इज डूइंग लाइक ऐसा हिंदी में हिप हॉप, एंड दैट्स लाइक अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मी, यू नो, दैट वे कि क्योंकि आई डोंट थिंक उस वक्त स्वैग मेरा देसी भी आया था, या मतलब दैट वे रफ्तार का वो भी नहीं आया था। इट जस्ट आई थिंक इक्का का सपने ही सुन रखा था मैंने, तो वो वहां से सुन के वो टोटका में इक्का भाई के साथ कोलैब करना, दैट्स आल्सो लाइक द आर्क ऑफ द स्टोरी कि। एंड टोटका जैसा गाना है, फॉर मी इट्स द लास्ट एक्शन सेट पीस ऑफ मीन, यू नो, जहाँ पे फाइनली एक कैमियो एंट्री हो रही है एक सुपरस्टार की मेन लीड के साथ, एंड दैट वे। तो इन द प्रोसेस काफी सारी चीजें रियलाइज होती हैं, लाइक ऑनकोर मेरे साथ स्कूटी पे बैठ के लिखते हुए जा रहा है रिकॉर्ड करने, खत्म करते हुए, तो मेरे को ये भी है कि अभी भी हम दोस्त ही हैं, अभी भी वही सीन है, अभी भी वही हंगर है, अभी भी वही है। पहले भी ऐसे ही मे बी मैं कुछ रिकॉर्ड करने जा रहा होता था ऑनकोर के साथ स्कूटी पे बैठ के, जब मेरे पास दिल्ली में स्कूटी नहीं थी और मैं पीछे लिख रहा होता था। और अब ऑनकोर को लेके जा रहा हूँ मैं, लिखते हुए लेके जा रहा है वो, जो भी है। काम के घर पे
हम लोग अभी भी वैसे ही गाने बना रहे हैं जैसे हम पहले बनाते थे, बट अब काम का घर है दिल्ली में। अब वो मतलब अकेले रह रहा है दिल्ली में, तो हम लोग उसके घर पे चिल कर उसके घर पे गाने बना रहे हैं, अभी भी वैसे ही गाने बना रहे हैं। अभी भी हम पूरी पूरी रात, द सेम डे आई रिकॉर्डेड दिल्ली, Frappe also recorded a collaboration with Calm, and it happened back to back on the same night, and we were having fun throughout the night. Raga ke sath abhi bhi Raga made me realize that Raga had to be on this album because Raga has always been in all of my solo projects. Raga has been on Freshman, Raga has been on two songs on Rehearsal, Raga has been on Mehfil. Now Raga had to be on MEEN because hona hi tha. So that way. And the big, like, आपने कॉमन ग्राउंड पूछा, तो कॉमन ग्राउंड यही है कि हम अभी भी दोस्त हैं। यशराज इसलिए क्योंकि यशराज is as close as it gets from the Delhi sound, kind of, like, if you say look at it that way, but also because यशराज और मेरे में भी बहुत कॉमन चीजें हैं, like we relate on a lot of things. I think हम लोग का come up and the kind of family background and the culture that we come is pretty much similar. That's why अगर ऐसे पूछेगा कि मतलब he's I relate to him a lot that way. And apart from बाकी लोग who were like मेरे long time friends, and even like इक्का भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, and he has been looking like at me as like an artist who's looking at another upcoming artist and respecting him, and the mutual respect is there that way. यशराज के साथ बस ये है कि हम लोग अगेन वही, it comes down to a point where he's from a different generation altogether, but again we are friends. हम लोग पहले दोस्त बने हैं, फिर कोलैबोरेट करा है। तो yeah, I mean that way. काफी म्यूजिकल वो भी सेम ही है हम लोगों का, we relate to a lot of things, like we listen to the similar kind of stuff. So when I had this idea of making this particular song Savera, मेरा पहला choice was यशराज, because I kind of knew, no, also because he has made similar kind of like उस zone के गाने, like he has made धुंधला, he has made वो, but moreover I know why he made those songs, you know, not because he made those songs. I know why he made those songs, and I know that he will understand why I am making this kind of a sound and what I'm trying to do here. That's why he's on the album. And so, yeah, things like that. Well, all I'll say is, Yash, I hope that MEEN and all the music that you're going to give us in future, they find their love, they find their audience, and more importantly, they find their destination. But thank you so much for removing time to talk to me for on Vijay's playlist. Yash, this was a very, very wholesome chat, and I wish you all the very best for the future. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me, Vijayalakshmi.